Students, welcome back in the third video of History, Chapter 5th, Social and Religious Reforms. In the last lecture, we saw Prarthana Samaj and we studied about Dadoba P. Tarkhadkar. Then we studied about Maharshi Vittal Ramji Shinde. Then he started or established depressed classes mission. So now we will start our today's discussion on Satya Shodhak Samaj. Okay, so Mahatma Jyotirao Phule started the Satya Shodhak Samaj in 1873. Okay, so this Satya Shodhak Samaj was started or established by Mahatma Jyotirao Phule. So next, Satya Shodhak Samaj worked on the principle of formation of society on basis of equality. So equality of opportunity. Which opportunity? To get education, to get access to water at public wells, water at public taps, etc. So on the this type of this basis of equality. So Satya Samaj worked on the principle of formation of society on the basis of equality. They protested against untouchability. So students, in this 19th century and in this timing of between 1860 to 1890 1900, so in this period in India there was a practice called untouchability. So people differentiated between high class and lower class. So lower class people were considered as untouchables. So they protested. So Satya Shodhak Samaj protested against untouchability. They advocated education among the depressed classes and women. So what they did, Satya Shodhak Samaj people and Mahatma Jyotirao Phule, they started educating the people of depressed classes. Depressed classes means lower class of society. So so-called depressed class or so-called lower class, they were considered as untouchability. Women were not given rights. They were not allowed to come out of home, not allowed to take education, get educated. So Satya Shodhak Samaj started educating depressed classes and women. Mahatma Phule reformed the society through medium of books like ब्राह्मणांचे कसाब कसब ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड and सार्वजनिक सत्यधर्म. Okay, so these were the books of Mahatma Jyotirao Phule. He severely criticized the traditions and customs that made discrimination between man and woman, or rather human being himself. So he strongly criticized means he expressed his opinion in opposition of those traditions and those customs which were discriminating between man and women, and also rather human being himself means some depressed class, so-called depressed class, were given very bad treatment. So they were treated like animals. So all those customs and traditions were criticized by महात्मा ज्योतिराव फुले. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अभी हम देखेंगे सत्य शोधक समाज. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रार्थना समाज. ओके, तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने स्टार्ट किया सत्य शोधक समाज. कौन से ईयर में? तो 1873 में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। तो उन्होंने किन तत्वों पे काम किया? उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि जो सोसाइटी है, अपना जो समाज है, वो इक्वालिटी, समानता के बेसिस के ऊपर वो सोसाइटी बने, समानता उसका फाउंडेशन हो। सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। जो समाज में जो अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत का एक प्रकार का प्रैक्टिस चल रहा था समाज में, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके सत्यशोधक समाज के जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने। सो दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वीमेन। तो उन्होंने फिर जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, सो कॉल्ड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी था, और वुमेन था जिनको एजुकेशन अलाउड नहीं था सोसाइटी में, तो इनको इन्होंने पढ़ाया। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू। तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कुछ बुक्स लिखे जिनसे मतलब वो बुक्स में उन्होंने लिखा कि जिससे कि सोसाइटी रिफॉर्म हो, सोसाइटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, सुधारना हो। तो उनके बुक्स थे ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। सो इनके ये 4 बुक्स थे। और उसके बाद उन्होंने जो कुछ रूढ़ी परंपराएं थी गलत तरीके से, जैसे भेदभाव किया जाता था, या फिर जो इंसान है, इंसान को ही वो कुछ ऐसी रूढ़ी थी, परंपराएं थी समाज में कि इंसान को जो इंसान की तरह वो ट्रीट नहीं करते थे। तो उन सब को, उस ट्रेडिशन को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, अपोज किया। और फिर जो मैन और वुमेन में कुछ डिफ्रेंशिएशन होता हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, जैसे कि सिर्फ मैन को पढ़ना अलाउड है, वुमेन को अलाउड नहीं है, उन्होंने घर में ही रहना चाहिए। तो इन सब ट्रेडिशंस को महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने और उनके सत्यशोधक समाज ने अपोज किया। तर विद्यार्थ्यांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं की प्रार्थना समाज काय होता, नंतर कोणी त्याची स्थापना केली आणि कधी केली. ओके, तर आता आपण बघणार आहोत सत्यशोधक समाज. तर महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली 1873मध्ये. आणि सत्यशोधक समाजाचं तत्व होतं की जो समाज आहे आपला तो समानतेच्या बेसिसवर असला पाहिजे. नंतर मग त्यांनी जी अस्पृश्यता होती समाजात त्याला विरोध केला. नंतर जे डिप्रेस्ड क्लास होते, जे लोकांना वाळीत टाकलेलं होतं किंवा स्त्रियांना शिक्षण नाही द्यायचे, तर अशा दोघं स्त्रियांना आणि जे डिप्रेस्ड क्लास होते, लोएस्ट क्लास होते सोसायटीमध्ये, त्यांना शिक्षण दिलं. नंतर महात्मा फुलेंनी काही पुस्तकं लिहिली, जसं की ब्राह्मणांचे कसब, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड, नंतर सार्वजनिक सत्य धर्म. या पुस्तकातून त्यांनी समाजाचं प्रबोधन केलं आणि सुधारणा घडवून आणल्या. आणि तसंच त्या पुस्तकातून त्यांनी टीका केली, खूप परखड टीका केली. कशावर? अशा रूढी परंपरांवर की ज्याच्यातून स्त्री पुरुषामध्ये भेदभाव केला जायचा आणि काही मानवामध्येच, म्हणजे काहींना अगदी चुकीची वागणूक दिली जायची. तर त्या सगळ्या रूढी परंपरांना महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी विरोध केला. सो क्वेश्चन 1 होमवर्क. क्वेश्चन 1, राईट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय महात्मा ज्योतिराव फुले. राईट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय महात्मा ज्योतिराव फुले. क्वेश्चन 2, हू स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज. हू स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज and in which year? Who started the Satyashodhak Samaj and in which year? Question 3, Satyashodhak Samaj wanted the society to be based on which principle? Satyashodhak Samaj wanted
the society to be based on which principle? Okay.